Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathlite. In this video, we'll solve question 4 of Test Yourself from chapter Area and Perimeter of Plane Figures. So for each trapezium given below, find its area. There are 4 trapeziums given and we need to find out the area of all the 4 trapeziums. So first one I've drawn over here. There is a trapezium ABCD where AB and DC are parallel to each other. यहाँ पे arrows दिया है, so these two are parallel sides. These two are non-parallel sides, AD and BC, okay? We are given the values of all the 4 sides. So I'll be using the formula of area of trapezium only, okay? So area of trapezium का formula क्या है? First we'll see how to solve, okay? And then we are going to solve with proper steps. तो पहले देखते हैं कैसे solve करेंगे. Area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. So parallel sides कौन सा है? Parallel sides are AB and DC, right? So I know the values of AB and DC. What about the height? I don't know the height. I need to find out. तो height कैसे find out करेंगे? Construct करना पड़ेगा पहले height. So height between the parallel sides. Okay, ये जो parallel sides है उसके in between जो height है, जो distance है, that you need to find out. So construct CE perpendicular to AB and DF perpendicular to AB. Okay. So दोनों vertices से we'll draw perpendiculars to the base. All right. So when you are constructing the perpendiculars, क्या हो जाएगा? We know CE and DF will be same length, है ना? ये दोनों ही height हो जाएगा. Why they'll be same? Because these two are parallel lines and the distance between the parallel lines is always same, right? So either CE find out करो या DF find out करो, कोई भी एक find out करो, height मिल जाएगा, okay? Now CE and DF is forming this rectangle. ये rectangle form हो रहा है कैसे? ये 90 है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों भी 90 होगा. क्यों? Because these two lines are parallel and co-interior angles form हो रहा है. तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा. Sum of angles will be 180 degree. Same thing यहाँ पे, okay? So this is a rectangle. Therefore opposite sides will be equal. Correct? ये 12 है तो FE भी 12 होगा. So this is 12. 20 minus 12, 8. So 8 यहाँ पे equally distribute हो जाएगा. ये 4, ये 4. Why? I'll tell you. Only in such a case जहाँ पे non-parallel sides are congruent. That is, it is an isosceles trapezium. Okay? Isosceles trapezium क्या होता है? जहाँ पे non-parallel sides, ये जो non-parallel sides है, they are equal in length. Okay? तो यहाँ पे दोनों equal है, 10, 10 है. That is why ये भी equal parts में divide होगा. Okay? So that is why this will be 4 and this will be 4. Alright? So now we can easily find out H using any one triangle. मैं ये consider करने वाली, you can consider this also. Okay? So considering CEB, this is a right angle triangle. I need to find out H. I know this is 4, this is 10. Pythagoras theorem apply करेंगे, H find out करेंगे. Once we get the value of H, put it in the formula, find out the area of the trapezium. Okay? So let us solve now with proper steps. So first write down the given. AB is 20 centimeter, then BC is 12 centimeter and AD equals BC equals 10 centimeter, and also write down AB is parallel to DC. Okay? यहाँ पे in trapezium add कर देना. We are talking about trapezium, right? So this is the given. Now we'll do the construction. So construction. Draw CE and DF perpendicular to AB. Okay.
सो दोनों ही परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट हो गया. ओके, दोनों रिक्वायर्ड है बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट ये कितना है, ये कितना है ना. ये 4 4 है, ये फाइंड आउट करने के लिए पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई वी कंस्ट्रक्टेड बोथ द परपेंडिकुलर्स. ओके, सो ये कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया. नाउ लेट अस सॉल्व. So first we'll write down that FECD will be a rectangle. Okay, so quadrilateral FECD is a rectangle, therefore BC equals FE equals 12 centimeter. Okay, so therefore AF and BE will be 4 4 centimeter each. Okay, so therefore AF plus BE will be equal to 8 centimeter. दोनों का सम 8 होगा because the whole was 20. इतना 12 है तो ये 4 और ये 4 हो गया. Okay, so दोनों मिला के 8 centimeter, but both are equal. So therefore AF and BE both are 4 centimeter each. Okay, now we'll consider any one triangle. I'm considering CEB. Okay, so in triangle CEB, I know EB is 4 centimeter and BC is 10 centimeter. All right, and angle CEB is 90 degree. Why are we writing this? So that it shows that it is a right angle triangle, therefore we can apply Pythagoras theorem. Okay, so using Pythagoras theorem, we'll get CE square plus EB square is equal to BC square. So CE squared plus 4 squared is equal to 10 square. So CE square plus 16 is equal to 100. So 100 minus 16, that will give 84, right? So ये perfect square नहीं है, हम लोग को रूट में मिलेगा. So CE will be equal to root of 84. You're taking square root on both the sides, so write down taking square root on both the sides. Okay, root of 84 factorize करके find out करो. 2 42s are 2 21s are and 3 7s are. ठीक है, so दो 2 में से एक 2 बाहर आएगा. Okay, so we'll get CE is equal to 2 and 3 into 7 21 inside the root centimeter. Okay, so height मिल गया हम लोग को. Height is 2 root 21 centimeter. Now we'll use the formula area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. So CE मिला 2 root 21, correct? Now we'll find out the area of the trapezium ABCD by using the formula. So area of trapezium ABCD is half into sum of parallel sides into height. So that is half into AB plus BC into CE. That gives half into AB is 20, BC is 12 and CE we just found 2 root 21. 2 2 cancel हो जाएगा. So ये हो जाएगा 32 root 21 square centimeter, right? So this is the answer. All right, बॉक्स कर दो. नाउ स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट कि रूट का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड डेसिमल में आंसर फाइंड आउट करो. ओके, यू कैन कीप इट लाइक दिस बट रूट 21 का डेसिमल फाइंड आउट कर लो. ओके, सो लेट्स सी हाउ वील फाइंड आउट रूट 21 का आंसर.
सो 21 एंड डेसिमल पॉइंट पुट करके 0 0 0 0 0 ओके। सो दो 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 का ग्रुप रखो, ऑल राइट। सो जीरोस का हमेशा 2 का ग्रुप रखेंगे, 2 to 0 एट अ टाइम नीचे आएगा, ओके, नॉट लाइक नॉर्मल डिविजन। यहाँ पे लॉन्ग डिविजन मेथड में 2 to 0 कम डाउन एट सेम टाइम। सो 21 यहाँ पे है, 21 से क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा है? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। 25 इज बिगर देन दिस, सो 4 का स्क्वायर 16, so 4 4s are 16, right? So subtract करो यहाँ पे 21 minus 16 5, right? दोनों जीरो नीचे आएगा, जैसे ही ये दोनों जीरो नीचे आएगा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जीरो है, सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट कर दो, ओके। एट द सेम टाइम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 4 से, ओके, यहाँ पे लॉन्ग डिविजन मेथड में जो नंबर कंसिडर किया है उसी से मल्टीप्लाई करना है, और सेम टाइम पे यहाँ पे ऐड करना है सेम नंबर। सो हियर वील ऐड द सेम नंबर। 4 + 4 8, राइट इट लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे, ओके, लीव लिटिल स्पेस ओवर हियर। 8 के पीछे अब एक नंबर पुट करना है एंड यू विल मल्टीप्लाई विद दैट सेम नंबर। इफ यू पुट 0, 80 into 0, if you put 1, 81 into 1, if you put 2, 82 into 2, okay, so that is how you will solve। तो यहाँ पे कुछ नंबर पुट करना है and that number should be closest to 500, okay, just like normal division, but only thing is यहाँ पे जो नंबर कंसिडर कर रहे हैं वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, okay। So let's check 85 into 5, 5 5s are 25, 5 8s are 40, 42, okay। So 425, I think 86 into 6 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, so 6 6s are 36, 48, yes, so it's bigger than 500, so 85 into 5, okay, that will give 425। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 75 मिलेगा, ये दोनों जीरोस नीचे आएगा, ओके। यहाँ पे 5 पुट किया है तो add 5, so this will give 90, again write it little bit on the left, यहाँ पे एक नंबर पुट करना है, ओके। so find up to 2 or 3 decimal places, आंसर फाइंड आउट करो एटलीस्ट टिल 3, I'll tell you why। थर्ड डेसिमल प्लेस पे जो नंबर होगा उसके हिसाब से राउंड ऑफ करके सेकेंड डेसिमल प्लेस तक लेकर आओ, ओके। सो इफ यू आर गेटिंग 4.578 सपोज, ओके, देन ये 8 है, 5 और ग्रेटर देन 5 है, देन यू विल ऐड 1 ओवर हियर, ओके। अगर ये कम होता देन you will not add, keep it as it is, okay। so depending on the third digit you will round off, so और दो digits find out करेंगे। so 90 है, 90 के पीछे you have to put a number, all right, so same number से multiply करेंगे, so 7500 है, so 905 into 5, so let's see 905 into 5, 5 5s are 25, 5 9s are 45, 4525, we are getting quite small number, ठीक है। so 908 into 8 करके देखते हैं, 64, 72, so yes we are getting quite closer to 7500। 909 into 9, so this will be bigger, so 908 into 8, और यहाँ पे 8 ऐड होगा, ओके, सो ये 916 हो जाएगा एंड यहाँ पे 7264, सो सब्ट्रैक्टिंग दिस, सो 632, ऑलराइट, 236 एंड 2 जीरो नीचे आएगा, सो 916 के पीछे एक नंबर पुट करना है, वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो 916 2 into 2 देखते हैं, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 1s are 2 plus 1 3 and 18 18324 मिल रहा है, ओके। सो
18324 9163 into 3 देखते हैं. 6 3s are 18, 4 9 3s are 27. So this is bigger. 2 आएगा. Okay. So यहीं पे एंड कर दो. You don't need to do any further calculation. 4.582 मिल रहा है. So थर्ड डेसिमल प्लेस पे नंबर इज लेसर देन 5. सिंस इट इज लेसर देन 5 हम लोग ये इंक्लूड ही नहीं करेंगे. इट विल बी 4.58. Had it been 5 or more than 5 we would add 1 over here. So it would become 4.59. Okay. So this is the value 4.58. Okay. Multiply 4.58 into 32. We got 32 root 21, right? So multiply 32 into 4.58 and find out the answer in decimal. So area of trapezium, we were getting 32 root 21, right? Square centimeter. So it is 32 into 4.582. You can consider 2 and then you can reduce it, okay? So multiply करके value find out करो. 4582 into 32. 2 2s are 4, 2 8s are 16, 11 and यहाँ पे 9. 3 2s are 6, 3 8s are 24, 3 5s are 15 plus 2 17, correct? And 13. So we are getting 146.624, correct? डेसिमल पॉइंट 3 नंबर्स से के बाद है, सो यहाँ पे भी 3 नंबर्स के बाद आएगा. ओके. एंड ओवर योर 4 है, सो यू कैन इग्नोर 4. यू आर गेटिंग 146.62 अप्रोक्सीमेटली. यू कैन पुट अप्रोक्सीमेटली का साइन over here. All right, square centimeter. Don't forget the units. Whenever you're writing down the answer, please don't forget the units, students. All right. Let's find out the area of the second trapezium. Second trapezium is also named as ABCD, where AB is 14 centimeter, DC is 8 centimeter, and BC is 10 centimeter. AB and BC are the parallel sides, and AD and BC are the non-parallel sides. Okay. यहाँ पे height दिया नहीं है. AD would be the height, right? So AD दिया नहीं है यहाँ पे. So we need to find out the height. So height find out करने के लिए वापस से construction करेंगे. We'll construct CE perpendicular to AB. Okay. When we construct this, what will happen? ये rectangle हो जाएगा. Okay. So since this is a rectangle, opposite sides will be equal. So ये 8 है, ये भी 8 हो जाएगा. Whole thing is 14. 14 minus 8 gives 6. So CE find out कर सकते हैं now using this triangle. All right, Pythagoras theorem से. So let's find out CE and then we'll find out the area of the trapezium. All right. So given पहले लिखेंगे in trapezium ABCD. AB is parallel to DC. Then AB is 14 centimeter, DC is 8 centimeter, and BC is 10 centimeter. This is the given information. Construction. I am not writing the two find part, students. Two find में सब में you have to find out the area of the trapezium ABCD. Okay. So I am not writing two find part. You will write down on your own. ठीक है. Construction. Draw CE perpendicular to AB. So starting with the solution. First we'll consider this rectangle. Okay. Actually square हो रहा है. Why? ये 6 है, ये 10 है. So by Pythagoras theorem हम लोग को ये 8 मिलेगा. So this is going to be a square actually. But we still don't know whether it is a square or rectangle. So we are considering it a rectangle. Okay. So quadrilateral AECD is a rectangle. Therefore AE is equal to DC is equal to 8 centimeter.
Give reason over your opposite sides of rectangle. In previous sum I forgot to write down. Okay, तो जब भी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो देन गिव रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम जो भी है. ओके, प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो वो लिखना पड़ेगा. AE is 8 centimeter, so EB will be 6. So write down AE plus EB is AB, that is 8 plus EB is 14. So EB is 14 minus 8, that is 6. Don't skip steps students, please don't skip steps. Okay, so EB मिल गया. अब ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे. In triangle CEB, we know angle CEB is 90. Okay. We know EB is 6 centimeter and BC or CB is 10 centimeter. Using Pythagoras theorem, I'm not writing it down. Reason लिखना पड़ेगा. जब भी theorem use कर रहे हो लिखो. So using Pythagoras theorem, we are getting CE square plus EB square is equal to BC square or CB square. So EB is 6, BC is 10, 6 का square 36, ये 100. So CE square is 100 minus 36, so that gives 64. Taking square root on both the sides, give reason. Okay, तो height मिल गया अब हम लोग को. Using the height and the parallel sides, we'll find out the area of the trapezium. So area of trapezium ABCD is half into sum of parallel sides into height. So half into parallel sides है AB and DC and height is CE और AD दोनों ही same होगा, right? Perpendicular distance between two parallel lines. So half into 14 plus 8 into CE we got as 8, right? So 2 4s are, and this will be 22, correct? So 88 square centimeter. Don't forget the units, box the answer. All right, now proceeding to the third trapezium. For third trapezium ABCD, we are given AB parallel to DC and sides AB BC CD AD का length दिया हुआ है. Okay, so over here again we need to find out the height of the trapezium because we know parallel sides का length but we don't know the height of the trapezium. Over here I'll be following different method. I'll tell you why later. Okay, I'll show you the calculations as well. There is some error in the question, so we are going to follow a different method over here. What we'll do is we'll not construct perpendicular. Instead, we will draw a line from C which is parallel to AD. Okay, so CE, you will construct CE in such a way that it is parallel to AD. So what will happen? AB is parallel to DC, therefore AE is also parallel to DC and AD will be parallel to CE by construction. So this will be a parallelogram, है ना? Opposite sides are parallel, therefore it is a parallelogram, hence opposite sides will be equal. Okay, so ये 20 है तो AE भी 20 हो जाएगा. Okay, so this is 20. 32 minus 20, ये remaining part EB will be 12 centimeter. This is 10, therefore this is also 10. Okay, now we will find out the height of the trapezium. Height क्या हो जाएगा? This perpendicular distance between the parallel sides.
है ना, ये perpendicular distance between the parallel sides is the height of the trapezium. So what we will do is we'll consider this triangle CEB. Okay, CEB, we know all the three sides, ये 10 है, ये 12 है, ये 16 है. So I can easily find out the area of this triangle using Heron's formula. By Heron's formula, area will be root of s into s minus a into s minus b into s minus c, है ना. So area ये है, a, b and c are the three sides. Take this as a, this as b, this as c. Okay. And semi perimeter s find out करना पड़ेगा. S will be a plus b plus c divided by 2. Okay. Put the values of s and a, b, c and find out the area of the triangle. Once you get the area of the triangle, area का एक और फॉर्मूला है for triangle, half into base into height. Now if you notice, ये जो ट्रायंगल का हाइट है, it is the height of the trapezium as well. So if I find out the height of the triangle, it is applicable for the trapezium also. So using the area of the triangle, I'll find out the height of the triangle, which is the height of the trapezium as well. So height कैसे find out करेंगे? For this height, what is the corresponding base of the triangle? अगर मैं ये height लूं, then this height is drawn to this base. So this will be the base of the triangle. So I know the base, it is 12. I'll find out the area using Heron's formula and then find out the height. Okay. So area और base का value put करेंगे, height find out करेंगे. जो भी value height का मिलेगा, that is the height of the trapezium as well. And then we'll use the formula, area of trapezium is half into sum of parallel sides into height. Parallel sides AB और DC है, जिसका value पता है, and height का value यहाँ से मिल जाएगा. Okay. So let us solve now with proper steps, and then I'll show you कि क्या problem हो रहा है if you draw perpendiculars and then try to find out. Given information is written using the figure. Okay. So trapezium ABCD में सारा length and the parallel sides. To find part I have not written. You need to find out the area of the trapezium ABCD. Construction, drawing CE parallel to DA. CE is constructed parallel to DA. Okay. So this will become a parallelogram. AECD will become a parallelogram. So starting with the solution, quadrilateral AECD is a parallelogram. Okay. Therefore, opposite sides will be equal. AE will be equal to DC, which is 20 centimeter. Okay. And we'll get AD equals CE. So पहले CE लिख लेते हैं. CE equals AD equals 10 centimeter. Why? Opposite sides of parallelogram. Okay. So now we have AE and CE का value. तो EB भी find out कर लेते हैं because we'll consider triangle CEB. So EB find out करेंगे. So AE plus EB is equal to AB. AE is 20. AB is 32. So EB will be 12. Now we have all the three sides of this triangle. So let us find out the area of the triangle using Heron's formula. So in triangle CEB, ABC लिख लेते हैं. A I am taking as 10, B as 12 and C as 16. This does not matter, order कैसे भी लिखो. Okay. So semi perimeter find out करेंगे. So this will be 10 plus 12 plus 16 divided by 2. That gives 38 by 2.
So that will give 19. Okay, A, B, C and S का values है, so let's find out the area using the formula. Area of triangle CEB will be root of S into S minus A into S minus B into S minus C. So putting the values, S is 19 into 19 minus 10 into 19 minus 12 into 19 minus 16, right? 10, 12 and 16 है. So that will give 19 into 9 into 3 into, sorry, 12 है, so that will give 7 into 3, right? So 9 का square root हो जाएगा 3, rest of the numbers will remain in the bracket. So 19 into 21, 19 into 21 find out करते हैं, 38, so 399 मिल रहा है. 3 root 399 is the area of this triangle. Using the area we'll find out the height. Okay, height corresponding to base EB. Okay, तो base पता है 12 होगा, area पता है, let's find out the height. So this will be the height of trapezium as well. All right, so if base is equal to 12 centimeter, then area of triangle CEB by formula half into base into height, area है 3 root 399, base is 12 and height find out करना है, 2 6 so 3 root 399 upon 6 is equal to h. So that will give h as root 399 upon 2. Keep it as it is for now. ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में मिल रहा है. Don't forget to write down units. Okay, तो height मिल गया. Same is the height of the trapezium. So let's find out the area of the trapezium. So area of quadrilateral ABCD will be half into sum of parallel sides into height, that is half into parallel sides है AB and DC. AB is 32 and DC is 20, sum of the parallel sides, so put brackets, and height is root 399 by 2. So that will give 52 into root 399 upon 2 into 2, 4. Okay, so that will give 13 root 399. So 13 root 399 square centimeter. This should be acceptable students because ये बहुत बड़ा number है root में. If not, then you know how to find out root, right? Using the long division method. So वो भी मैं बता रही हूँ कैसे find out करेंगे. Okay, so root 399 find out करके देखते हैं. So 399.0000. I'm going to find up to 2 decimal places only. Now students, this is a big number है ना, तो इसका square root find करने में थोड़ा time लग जाएगा. So what you can do is use a trick over here. Now 399 का square root है, which is the next perfect square after 399. perfect square, ये तो perfect square है नहीं, तो perfect square कौन सा होगा? 400, number after 399. So 400, and इसके पहले वाला perfect square 361 है ना. 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400. सो इसका स्क्वायर रूट 19, इसका स्क्वायर रूट 20. 399 इज जस्ट वन नंबर बिफोर 20, तो इट विल बी वेरी क्लोज टू 20.
मतलब 19.9 कंसिडर कर सकते हैं ये, है ना. सो यू कैन कंसिडर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओवर हियर 399, रूट 399 को 19.9 ले लो, मल्टीप्लाई कर लो 13 से एंड फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, बिकॉज दिस विल बी लिटिल लेंथी प्रोसीजर. सो यही मेथड से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो परफेक्ट स्क्वायर्स. ओके, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद है, देन दिस इज एक्चुअली वेरी इजी. ओके, तो 19.9 ले लो, मल्टीप्लाई विथ 13 and find out the value. You will not get exact value as given in textbook. Okay, तो textbook जैसा value चाहिए तो find out करना पड़ेगा. All right, but I think it will be acceptable. So 399 से कम वाला स्क्वायर कौन सा होगा? 361. अब भी हम लोग ने फाइंड आउट किया. सो 19 into 19, हमेशा स्क्वायर देखेंगे. ओके, फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग आउट द परफेक्ट स्क्वायर बिलो द गिवन नंबर. सो 19 19s are 361. Okay, let's subtract. So this will give 38. दोनों जीरो नीचे आएगा. 19 plus 19 हो जाएगा, right? 19 plus 19, 38. Write it little bit on the left. यहाँ पे स्पेस छोड़ो because we'll be putting some number and multiplying with that same number. यहाँ पे दोनों जीरो नीचे आया है after decimal point, so you need to put decimal point over here. 38 के पीछे नंबर पुट करना है, so 381 into 1 और 382 into 2, something like that. Okay, 3800 से छोटा नंबर होना चाहिए, क्लोजेस्ट नंबर होना चाहिए. सो 385 into 5 देखते हैं. सो 5 5s are 25, 5 8s are 40 plus 2 42, and 15 plus 4 19. Quite small, right? 389 into 9 करते हैं. सो 9 9s are 81, 9 8s are 72 plus 8 80 हो जाएगा. 9 3s are 27 plus 8, so that will give 35. 3501. Okay, so 3501. यहाँ पे 9 ऐड करेंगे, जो नंबर पुट किया है वही ऐड करेंगे. ओके, subtracting over here now. This will give 0 9, sorry 9 9 and 2, 299. दो जीरोस नीचे आएगा एंड यहाँ पे ऐड करके we will get 398. 398 के पीछे एक नंबर पुट करना है, वही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो लेट्स कंसिडर 3985 into 5. मिडवे ही कंसिडर करते, फिर देखेंगे ऊपर नीचे कैसे लेना है. ओके, 5 5s are 25, 5 8s are 40 plus 2 42, 45 plus 4 49, 5 3s are 15 plus 4 19. Okay, so we are getting 19925. It is smaller than this, correct? So bigger number. Let's take 3986 into 6. 6 6s are 36, 48 plus 351, 54 plus 5 59, 18 plus 5, that will give 23, right? So 23916, still smaller. So I think it should be 3987 into 7. I'm just assuming. Okay, so round off करके 19.97. Okay, तो इसकी जगह पे 19.97 कंसिडर करेंगे. So 13 into 19.97, मल्टीप्लाई करो 1997 into 13. 1997 into 13. 3 7s are 21, 3 9s are 27 plus 2 9, 27 plus 2 29, 5
1997. So 16, 19, 15, 25961. पुटिंग डेसिमल पॉइंट नाउ, दो नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट है, राइट से हमेशा देखो। सो 259.61। अगर एक और डेसिमल पॉइंट तक फाइंड आउट किया होता देन यू वुड हैव गॉट एग्जैक्ट आंसर एज गिवन इन टेक्स्ट बुक। ओके, सो यहाँ पे 259.61 मिल रहा है स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज स्टिल एक्सेप्टेबल स्टूडेंट्स, दे कैन नॉट गिव यू रॉन्ग। ओके, now I'll show you why the method that we use normally is not applicable over here. So you are given this trapezium, okay, A B C D, इसका वैल्यू 20 दिया है, इसका 32 दिया है, इसका 16 दिया है, इसका 10 दिया है, राइट। नाउ इफ यू आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रेक्टेंगल हो गया है ना, तो ये 20 हो जाएगा। नाउ remaining portion will not be equal over here. Why? Because this is not an isosceles trapezium. Isosceles trapezium में ये non parallel sides are equal in length. यहाँ पे equal नहीं है तो ये parts भी equal नहीं होगा। Okay? EB और AF equal नहीं होगा यहाँ पे। So what will happen? ये 20 है, total 32 है। Okay, total 32 है, तो 20 subtract किया 32 में से, कितना बचेगा? 12 है ना। तो AF प्लस EB मिला के इट इज 12। ओके, सो आई कैन से AF प्लस EB इज 12। इफ आई टेक दिस एज X, देन व्हाट विल बी EB का वैल्यू? EB विल बी 12 माइनस X, है ना। नाउ व्हाट वील डू, हाइट फाइंड आउट करना है ना, तो हाइट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसके लिए x पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हाउ विल वी फाइंड आउट x? वी नो CE एंड DF बोथ आर इक्वल बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना। सो दोनों ही इक्वल होगा, है ना। सो इफ आई टेक दीज टू एज h, देन ये ट्रायंगल कंसिडर करूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट विल आई गेट? h square plus 12 minus x the whole square is equal to 16 का square. So I am getting h square is equal to 16 square minus 12 minus x the whole square. Right, I am getting this. And ये triangle consider करूँ DFA, then using Pythagoras theorem, ये 1 है, I'll get h square plus x square is equal to 10 square. Correct? So I will get h square is 10 squared minus x square. तो LHS सेम है, RHS सेम होगा, so I can say this is equal to this. So if I equate this, then 16 squared minus 12 minus x the whole squared is equal to 10 squared minus x square. Let's solve this. Now you'll see the error in the question. 256 minus a minus b the whole square है, so using the formula a square minus 2ab plus b square, so 144 minus 24x plus x square, यहाँ पे 100 minus x square, so signs will change now. Okay, minus x square कैंसिल हो गया, ये सॉल्व करेंगे, so we are left with 112 plus 24x is equal to 100. Shift 112. So what are you getting over here? x negative मिल रहा है. How is that possible that you are getting a length of a side negative? So you see that is the problem over here. अगर यहाँ पे x लिया और यहाँ पे 12 माइनस x लिया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x का वैल्यू मिलेगा. ओके, यू विल गेट x का वैल्यू ओवर हियर,
but you will get it greater than 12. It is 12.5. Okay, so you can see over here 12 माइनस एक्स का बात हो रहा है, ये दोनों मिला के ही 12 है, तो x का वैल्यू 12 से ज्यादा कैसे हो सकता है, राइट? सो देयर इज सम एरर इन द क्वेश्चन, सो दिस इज द रीजन वी डिड नॉट फॉलो दिस मेथड. ओके, तो अगर ये इंटरचेंज करके भी देखा, ये x लिया और ये 12 माइनस एक्स लिया, ओके, यू विल गेट x बट यू विल गेट इट एज 12.5. एंड एक बार x मिल गया, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट हाइट, राइट? सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. सो ये केस में हाइट मिलेगा अगर इसको x लिया, बट you should be able to understand that, right, during exams. So there is some problem with the question, so this is the reason we use parallel wala method over here. Okay, for fourth trapezium ABCD, we are given AB parallel to DC and we are given the lengths of all the four sides. Over here I'll be using normal method. You can use the other method, that is parallel construct करके triangle का area find out करो and then find out the height. Same will be the height of the trapezium. Okay, so I think that is a lengthier method, so this is the reason I'm not following that method. So I'll be constructing two perpendiculars from the vertices C and D. ये perpendiculars कंस्ट्रक्ट किया तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा. ओके, सो नेमिंग द पॉइंट्स, FECD विल बी अ रेक्टेंगल, देयरफॉर ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा. 30 माइनस 18 विल गिव 12. ओके, सो AF और EB मिला के 12 है. Okay, but AF and EB will be equal over here. Why equal? यहाँ पे you have isosceles trapezium. Okay, isosceles trapezium क्या होता है? जहाँ पे non-parallel sides are equal in length. तो ये जो दो sides है, they are equal in length. Therefore ये triangles भी equal है. Logically देखो तो triangles भी equal होगा, congruent होगा, because the angles are equal. 90-90 in both the triangles. Also hypotenuse equal है and one more side is equal. So by RHS test both the triangles are congruent. Okay, therefore by CPCT sides भी congruent होगा. Okay, so logically वैसे हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, correct? So considering any one triangle, applying Pythagoras theorem, we'll find out the height of the trapezium. All right, so I'm not writing down given and anything. All right, I'm directly starting with the solution. So सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन is drawing CE perpendicular to AB and DF perpendicular to AB. I'm not writing it, please write down. Okay, so drawing CE perpendicular to AB and DF perpendicular to AB. So quadrilateral FECD is a rectangle. Therefore FE is equal to DC is equal to 18 centimeter, opposite sides of rectangle. FE और DC equal है, therefore AF और EB 6 हो जाएगा. ओके, सो राइट डाउन AF प्लस EB दोनों मिला के 12 हो जाएगा, बट AF is equal to EB, therefore AF equals EB equals 6 centimeter, right? Now considering any one triangle, I'll be considering triangle CEB. We know EB is 6 centimeter, BC or CB is 12 centimeter, angle CEB is 90 degree by construction, right? So using Pythagoras theorem, I'm not writing. Please write down wherever you're using a theorem. CE square plus EB square is equal to BC square. CE find out करना है. EB is 6, BC is 12. So 36 and ये हो गया 144.
144 minus 36. So that will give 108, right? So ये perfect square नहीं है. Give reason taking square root on both the sides. So over here 108 को factorize करके देखते हैं. 2 54s are, 2 27s are, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. So दो दो का ग्रुप बनाओ. ओके एक 2 एंड एक 3 बाहर आएगा. ओके सो 2 into 3 6 and 1 3 will remain inside. So 6 root 3. So CE is 6 root 3 centimeter. We found the height. So let's find out the area of the trapezium now. Area of quadrilateral ABCD will be half into sum of parallel sides into height. So that will give half into parallel sides are AB and DC. So AB and DC and height is CE. So half into whole is 30. This is 18 and CE is 6 root 3. 2 3s are. ये हो जाएगा 48 into 3 root 3. So 8 3s are 24. 3 4s are 12 plus 2 144 root 3. Putting root 3 का वैल्यू 1.732. ये तो याद ही रहना चाहिए. ओके सो 1732 into 144. 4 2s are 8. 4 3s are 12. 28 plus 1 29. 6 अगेन सेम नंबर्स रिपीट होगा, राइट यही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2371. सो दैट विल गिव 249408. 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट. सो 249.408. थर्ड प्लेस पे द नंबर इज ग्रेटर देन 4. 5 या ग्रेटर देन 5 होगा देन यू विल एड 1 टू द प्रीवियस डिजिट. सो यहाँ पे 8 है सो एड 1. सो 0.41 हो जाएगा. सो 249.41 square centimeter. Don't forget the units and box the answer.